Namaskar and good evening to all of you. Paramita Pandaji, today's Utsav Murti, Shri Bhima Prashti, the second Utsav Murti, हमारे Benudhar Mahapatra ji, and the third one, the great flutist, Shri Mohini Mohan Patnaik ji. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके सामने आज यहाँ खड़ा होकर इन बहुत ही जिनको मैं कहूँगा कि हमारे ये लिविंग ट्रेजर है तीनों, ये थोड़े से युवा है एज कंपेयर टू आवर टू सीनियर अवॉर्डीज़, इनके साथ रहने का आनंद और उनको सुनने का देखने का आनंद मेरे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है, प्रेरणादायक। वैसे भी I must also congratulate and thank and express my gratitude towards Ila and Bansidhar Pandaji for instituting such a wonderful award. I think if there is one state where I have really fallen in love with, that is Odisha. It is like a कैलिडोस्कोप जैसे है, थोड़ा एंगल चेंज करो एक नया डिज़ाइन आ जाता है, और चेंज करो तो एक डिज़ाइन आ जाता है। और ये इतनी पवित्र भूमि है, लॉर्ड जगन्नाथ जो है उनके स्पर्श से पुनीत है। यहाँ पर चाहे वो स्थापत्य हो, आर्किटेक्चर हो, चाहे वो शिल्पकला स्कल्पचर हो, चाहे वो पटचित्र हो, चाहे वो जयदेव से लेकर और हस्ती गुम्फा से लेकर आज फकीर मोहन जी तक और आज के जो आधुनिक राइटर है सब तक बहुत समृद्ध परंपरा है, और हम लोग एक तरह से उसके वारसदार है। वी आर कैरिंग द लेगेसी, सो इट फील्स नाइस इन द कंपनी ऑफ सच वंडरफुल पीपल हु लव आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, लिटरेचर। क्योंकि GDP is not the indicator of a greatness of a country. I think this, what I call pratibha, the talent, that is the greatest asset and treasure of any country. संस्कृत में कहा गया है कि नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा प्रतिभा, प्रतिभा का एक लक्षण बताया गया है कि like a flower, every moment it just keeps on blooming. नवोन्मेष शालिनी, दो बार शब्द आ जाता है नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा प्रतिभा। और यही तो भारत की विरासत है, यही तो भारत का एसेट है, स्ट्रेंथ है। जितनी विविधता हमारे देश में है, हमारे बचपन में टेक्स्ट बुक में शुरू में प्ले जाता था प्रतिज्ञा, उसमें एक सेंटेंस था, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे बांधव है, और आगे था कि आई एम प्राउड ऑफ द वेरीड हेरिटेज ऑफ माय कंट्री। एक सेंटेंस उसमें वो भी था। तो तब पता नहीं था कि ये वेरीड हेरिटेज क्या है, लेकिन जैसे जैसे मैंने भारत को देखने लगा, अनुभव करने लगा, तो पता चला कि व्हाट अ ग्रेट कंट्री इट इज़। यहाँ पर इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी अलग अलग परिवेश है, इतना सारा लिटरेचर है। यहाँ कामसूत्र भी है, व्याकरण शास्त्र भी है, नाट्य शास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, गणित भी है। इतना शायद ही किसी दुनिया के पास इतनी सांस्कृतिक धरोहर शायद ही किसी दुनिया के किसी देश के पास होगी। एंड व्हाट टू टॉक ऑफ लैंग्वेजेस, South Asia has the largest number of, more than 50% of the world's languages are in South Asia. हमारे दक्षिण एशिया में दुनिया के शायद सबसे ज़्यादा भाषाएं। देखिए, मतलब मैं कहाँ महाराष्ट्र से यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, कहाँ कश्मीर का कश्मीरी है, बंगाल, और each language is so
व्हाट शुड आई से, फर्टाइल, इतनी समृद्ध है, इतनी श्रीमंत है, इतनी अमीर है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि दुनिया में मैं किसी देश में कभी रह नहीं सकता, क्योंकि आई हैव बीन टू maybe more than maybe 90 countries or 100 countries, but the kind of variety that we have, इतनी विविधता मैंने कहीं पर भी नहीं देखी है। चाहे वो खाद्य संस्कृति हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो शिल्प हो, चाहे मंदिरों पे जो कलाकारी है वो हो, इतना this kind of diversity and variety I haven't seen. This is the greatest strength, and you all represent Bhima Pushti ji, our two awardees who got the Sarala Puraskar. They represent the true wealth. Coming to languages and literature, I feel again it is sad that I cannot speak and understand Odia. It is sad. But at the same time, it gives me pride also that in my country there are so many languages that I don't know. पहली बार जब मैं विदेश सेवा में था और जापान में मेरी पोस्टिंग हुई, तो सब लोग मुझे पूछते थे वहाँ पर, हो यू कम फ्रॉम इंडिया, इतनी सारी भाषाएं हैं, आप एक दूसरे के साथ बात कैसे करते हो, हाउ डू यू कम्युनिकेट विथ ईच अदर? So initially I was very defensive because Japan, as you know, one kind of people, one language, very disciplined, very hard working. Almost you can say everybody thinks like same. You have seen the bonsai and you have seen the ikebana. Every leaf is cut in a particular manner. That kind of, a very, very uniform society it is. So I was defensive. But जैसे जैसे दिन जाने लगे तो मैंने रियलाइज किया कि इन लोगों के पास तो एक ही भाषा है, मेरे पास तो इतनी भाषाएं हैं. These are the true ornaments of a people, language, culture. This is the true ornaments. And then I told them कि you simply have one language. And how have you built it? You have borrowed a lot from Chinese. You know Japanese script? Any of you know Japanese script? It has got 3 subscripts. It's called hiragana, katakana, and kanji. That is the pictorial part. So why pictorial part has been borrowed from China? Hiragana is for purely Japanese words, and katakana is used only for foreign words. So I said, you have taken so much of trouble to develop one language. And here is a country which has so many numerous languages. And these are not languages per se. Each language has so much of wealth in it. You have Kashmir mein Kallan hai, Bengal mein you have Tagore is there, in Karanth is there, in Karnataka, in Maharashtra you have again plethora of writers. Odisha, to every second person is a writer here. Particularly, I see my impression of the Odia officers in Delhi, with whom I got first exposed to Odia literature. I say every person I met was a writer, whether it is Amarendra Khatua or subsequently others. It was very amazing to see that so many people still believe in writing. And of course, from Jayadev to Sarala Das, right, who wrote this wonderful Mahabharata. I compare him with Maharashtra's Sant Dnyaneshwar, which is also my name, incidentally, because both of them broke the traditional norms and forms and created a new world of literature. They opened up the minds of society. They revolted against what was established earlier. उन्होंने एक नई प्रथा शुरू की, और ये बहुत आज शायद हमें उसका महत्व नहीं समझ में आता है, लेकिन महाराष्ट्र में एक भक्ति परंपरा, जैसे आपके यहाँ these panchashakhas, they're called, right?
Similarly, we have in Maharashtra Bhakti Parampara, and there's a Sant called Sant Eknath. And he said, because these people all started writing in Prakrit and Marathi, he said, because Sanskrit had a very high pedestal that time, but it had also a limitation because it was only in the hands of few. Common man had no access to Sanskrit. So he said, because Sanskrit is called Girvana Bharati, Divya Girvana Bharati, that is the language of gods, देवों की भाषा. तो he said कि संस्कृत भाषा देवे के लिए मराठी काय चोरापासून आली. The literal meaning of this is, if Sanskrit is derived from God, then has Marathi come from thieves? It's also a kind of a native product and everybody has right. So Sant Dnyaneshwar, Sant Tukaram, while they were all great saints, they were also great writers. They were great poets. They created a new idiom. And if there is something called social revolution and its beginning, it can be traced in the works of Sarala Das and the poets who lived in those times, and subsequently, of course, others carried on the revolution. And today we see that the writers and poets in all over India, they come from all backgrounds, and they are writing so beautiful. And when I look at Jambulok's story, it's so poignant. Like I have not read it, but the very translation in English, place of no return, the island of no return, is just amazing. ये तो हर देश में ऐसे लोग पाए जाते हैं who cannot return. And return meaning, return का बहुत अनेक अर्थ निकलते हैं. There are हमारे ही जिंदगी में ऐसे पल आते हैं when we can't return to that place. I remember I come from a village. तो मेरी माँ जब मैं पहली बार शहर चला गया पढ़ने के लिए तो पूछती थी वापस कब आओगे. फिर मैं कहा आई विल जस्ट फिनिश माय स्कूल एंड कम बैक. शी वाज मतलब as were many women of her age times, she was also not very, she could not read, she could not write. So she would ask me, when are you going to return? I said, I'm coming after school. Then after some time, she again asked. I said, I'll complete my college and then come. Subsequently, I did my graduation. Then I said, 2 more years I have to do post-graduation. Then I said, well, what do I do? I'm not fit to live now in the village. तो मैं थोड़ा नौकरी करता हूँ, पैसे कमाने का सीखता हूँ. So he said, and thereafter I'll come. Things went on like that. And I have not been. Well, of course I go there and I have got strong roots. बहुत मैं वहाँ जाता हूँ, काम करता हूँ. लेकिन जो एक, I cannot be again that person. So this happens with everyone. You cannot return to places. And then on the way, when you leave your roots and try to find new roots or new world, there are a tremendous amount of tragedy. You know कि कितने सारे refugees western countries में जाने की कोशिश कर रहे हैं. You know मेक्सिको के borders में क्या हो रहा है, दीवारें खड़ी की जा रही है अभी भी देशों देशों के बीच. हमारे और हमारे पड़ोसियों को देशों में भी फेंसिंग है. तो कई सारे लोग हैं दुनिया में जो अपने स्थान पर वापस नहीं जा सकते हैं. और बहुत बड़ी, we say that we are all evolved people. Sometimes I doubt that. Evolution is a myth. I think there's something happened with our cerebral capacity and we came to this particular point. But आज दुनिया में देखा जाए तो एक तरह से we are almost facing a disaster. चाहे वो climate हो, चाहे वो human relations की बात हो, चाहे वो family structure हो, चाहे वो social structure हो, somehow we seem to be disintegrating. वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं, लेकिन वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम की तरफ आना जो बहुत मुश्किल है. तो this young man, so simple he is, and he has created this beautiful work. That is also a beauty because you see, we urban people, we like to show off, we dressed well, but जो real talented लोग हैं, they're not bothered. They are full of life, full of ideas. And what I heard from
him is that he actually went to those people and studied, their life, understood their problems while being in there. This is very, very rare. And I'm also happy that he is writing in Odia. We must all now think about our own languages and what we are going to do with them. It's a very serious situation so far Indian languages are concerned. जब भी मैं लोगों को मिलता हूँ तो उनको मैं बताता हूँ कि within 3 generations a language can be wiped out. Within 3 generations. In पहले पीढ़ी में बच्चा स्कूल जाने लगता है और स्कूल में वो अंग्रेज़ी बोलता है, घर में आके अपनी मातृभाषा, चाहे वो उड़िया हो, तमिल हो, मराठी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, बोलता है. वो अपने माँ बाप के साथ, अपने नाना नानी के साथ, दादा दादी के साथ भी अपनी भाषा में बोलता है. इन सेकेंड जनरेशन, दैट इज व्हेन दिस पर्टिकुलर man becomes nana nani and his children become the parents. Their children now, the next generation, they will be speaking English both in school as well as in the colleges, as well as in the house. और अपने नाना नानी दादा दादी के साथ थोड़ा थोड़ा वो अपनी भाषा में बोलेंगे. अगली पीढ़ी जो आएगी उसके बाद वो ना घर में अपनी मातृभाषा बोलेंगे ना ही अपने स्कूल में बोलेंगे. तो ये है 3, एंड दिस इज हैपनिंग विथ ऑल ऑफ अस. मतलब आई ट्राइड माई बेस्ट टू टीच माई चिल्ड्रन माई लैंग्वेज. दे स्पीक ऑल राइट बट दे आर नॉट गुड इन रीडिंग, and their children are bound to lose it completely. So I see that, and why it is important? Because there is something called अस्मिता or identity. अगर हमें पता ही नहीं है जयदेव कौन थे वो लोग जिन्होंने कोणार्क का मंदिर बनाया, कौन थे लोग जो लिंगराज बनाया, सरला दास कौन थे और उनका क्या रिवोल्यूशन लैंग्वेज में लाए, अगर वो हमें पता नहीं है. इफ फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ मराठी आई डोंट नो संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, then I'm nobody. And then what will happen is I become so not only rootless, I also become shallow. I have got nothing to relate to. Well, you can say that, well, you become a global citizen. But global citizen cannot be without roots. No plant grows without roots. And that roots really is what sustains. That is where you would draw your sustainability. And we are losing our languages very fast. I am not at all opposed to English or French or German. Well, Indians are multilinguals. By nature, we are multilinguals, but we seem to be forgetting that we are multilinguals. So we need to really look at this very seriously. There is not only fashion, there is also a kind of a deliberate attempt to, in a sense, anglicize our society. And when I use the anglicize, भाषा के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, पूरी संस्कृति के बारे में बता रहा हूँ. तो हम अपना DNA जो है वो अगर एक बार खो जाए तो DNA वापस नहीं आएगा. सो बहुत ज़रूरी है, अगर हमें विश्वगुरु बनना है तो while we become global, we also need to be genuinely local persons. और आज के दिन में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ये मुश्किल बात हो रही है. दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ लैंग्वेज में, मैं अभी 5 मिनट 10 मिनट और बोलता हूँ, कि वी डोंट नो अबाउट ईच अदर. मतलब आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन महाराष्ट्र के कितने लोग जानते हैं कि इतनी समृद्ध साहित्यिक परंपरा जो है उड़ीसा में है? जानते नहीं जानते हैं. हम शेक्सपियर से प्यार करते हैं, इनके बारे में मिल्टन के बारे में बोलते हैं, टेनिसन के बारे में बोलते हैं, टी.एस. इलियट के बारे में बोलते हैं, लेकिन मैंने किसी को रमाकांत रथ के बारे में या महापात्रा जी के बारे में या अन्य जो आपके राइटर्स हैं उनके बारे में सुना नहीं है. हम लोग साहित्य अकेडमी के प्रोग्राम में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसके बाद डिस्पर्स हो जाते हैं. जो एक मंथन होना चाहिए, आपस में मिश्रण होना चाहिए,
लेन देन होना चाहिए, वो मैं नहीं देख रहा हूँ। उसके लिए दो चीज़ें जिम्मेदार है जो हम कर सकते हैं मिलकर, और कुछ हद तक वो हो रहा है कि जैसे मैं देखता हूँ, मैं उड़िया लैंग्वेज के बारे में मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि देयर आर मोर बुक्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम इंग्लिश इनटू उड़िया दैन फ्रॉम उड़िया टू इंग्लिश। दिस ट्रेंड इज रॉन्ग। मतलब एक अगर दूसरी भाषाओं से हमारे भाषा में आता है तो हमारी भाषा से एक किताब दूसरी भाषा में जाना चाहिए। ये असिमेट्रिकल रहेगा तो धीरे धीरे हमारी बड़ी क्योंकि जितनी अंग्रेजी किताबें बिकती है भारत में उतनी हमारी देशी भाषाओं की किताबें नहीं बिकती है। एक तो नंबर वन। दूसरा जो बहुत चिंताजनक ट्रेंड है वो ये है कि भारतीय भाषाओं में आपस में ट्रांसलेशन की मूवमेंट अभी पिकअप नहीं हुई है। वेरी वेरी पीपल डू इट आउट ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। इफ आई एम अ राइटर आई विल टेल someone like Pravasini, why don't you do the translation? But that is not how it should happen. It has to be a more organic process. मुझे लगता है कि एक तरह से जिसको हम भाषावार प्रांत रचना कहते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, वो होने के बाद शायद हम बहुत इंट्रोवर्ट हो गए या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली एक्स्ट्रावर्ट हो गए कि हम भारत के बारे में उस तरह से भूल गए। महाराष्ट्र में एक मूवमेंट होती थी आफ्टर ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट, अंतर भारती इट वाज कॉल्ड, दैट लेट अस स्ट्रेंथन इंडिया, विद इन इंडिया लेट अस स्ट्रेंथन विद ईच अदर। तो उसमें काफ़ी एक्सचेंज होता था, लोग एक दूसरे के राज्यों में जाते थे। बट अगर कोई सपना है यहाँ पर तो यही होता है कि वेल लेट्स गो टू यूके, लेट्स गो टू दुबई, लेट्स गो टू सिंगापुर। ये कोई नहीं कहता आसानी से, एंड इवन इफ दे गो बेसिकली टू places of touristic interest. So this cultural tourism needs to be picked up, in my view, very in a big way, and it can happen because all of us were more connected in the past. When I was looking at the relationship between Maharashtra and Odisha, I realized that from 1751 to 1803, Marathas were here. And interestingly, they fought with Alivardi Khan, who was Bengal's Nawab. And subsequently, they also fought and lost from the British. And if you go to Wikipedia, there is only one line about this. There is no mention that these very Maratha rulers not only protected Jagannath, they also created an environment conducive for the protection of the temple. They also gave what you call dakshinas and land to those who were caring for the temple. This is a history. I also read some statements that, well, Maratha rulers were not very good administrators. It's quite possible because that time what we see today, today's kind of organized governance was not there that time. But they did come here and they fought with two, you can say, quote unquote, external forces. But there is only one line in Wikipedia on that. There has to be, 50 years is a long time. And so many governors came and they were part of this community. And a lot of exchange must have taken place during that time. A lot of people might have settled here. A lot of people might have gone there. But there is no mention. So because whenever there is some exchange of this kind, a lot of exchange also takes place in culture, because I see a lot of similarity in the words in Marathi and Odia. So we need to now concentrate on ourselves also, and I'm glad to say, पिछले साल मैं यहाँ आया था, there was a national translators conference, and my friend Sharat Acharya had taken a lead in that, and I thought बहुत उपयुक्त ज़रिया है एक दूसरे को जानने का। तो उसी वक्त मैंने ऐलान किया था कि अगले साल, दैट इज़ दिस ईयर, एक कॉन्फ्रेंस जो है कोल्हापुर में होगी, विच इज़ माय होम टाउन। सो on November 2nd and 3rd, ऑल इंडिया ट्रांसलेटर्स कॉन्फ्रेंस हम लोग कोल्हापुर में कर रहे हैं, और यहाँ से
I think Odisha से करीबन 7-8 writers they are participating there. मुझे लगता है कि this is very very important for all of us, because I do feel that as a writer, well, I'm not as great as Bhim, or other luminaries of literature. But as a writer, it is my duty also to get other people's writing to my state in my language. That's why I translated Ramakant Rath's Sri Radha from Odia-Hindi to Marathi. It gives me pride because it's such a beautiful poetry, simple charm and elegant poetry. So this is what we need to really exchange more and more. I hope, I also feel that those people who have conceived this particular award, and then they're giving awards to the artists, to the sports person, to other people, it's very commendable. Because writers को लगता है कि we are the only creative people. मुझे लगता है कि creativity is not limited to any one field. It is there in industry, it is there in agriculture, it is there in any business, it is there in teaching. Even if the same a professor of English, if he is telling about one writer and explaining, each lesson becomes a new lesson, because he has to bring creativity. Otherwise, he will lose his own, creativity and enthusiasm. So I'm very happy that today I have got this great opportunity to be here, participate in this most prestigious literary award ceremony. I do hope that our exchange between languages within India grows. We also are able to read each other's, writings, not through some other language like Hindi or English, but through each other's languages. And when we do that movement, we will realize that we don't have to depend on English. Absolutely not, because English is a myth in a sense. We feel that English means we can get jobs. English means it is spoken everywhere in the world, and English means prestige. All these are actually fallacies which I have seen. Japan, Germany, France, these are developed countries, no English at all in these languages. That's because they have been able to create literature from what you say, nursery to doctorate level. We are not creating that kind of literature. I hope that through these awards, we really become somewhat inward-looking and try and promote our own culture, own art, own music, own drama, and be proud of this great Indian heritage. Thank you once again for inviting me all the way from Delhi, and hope to continue coming and hope to continue having my love deepened. I always say that this is not Utkal alone, it's Utkat Utkal. It's a deep and very strong state of art. And congratulations to all of you once again.